स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे सर, तो अभी अपन जो है ना सीधे लाइव चलते हैं एंड आई शेयर द स्क्रीन। वो जो जिस जिस सेक्शन के बताएंगे मैं लिखती चलूंगी सोना मैम, तो आप लोग देख के अपना फिर इनको ऑफ कर देंगे फिर, एंड देन वी विल डिस्कस जो भी थोड़ा बहुत रहेगा। All right. Okay. So we'll do one thing. Let's go live. All right. Good evening, everyone. Welcome to the official YouTube channel of Adda 24/7. And as all of us were really trying to give you an accurate analysis for SBI CBO examination also, but because of all the COVID scenario and all the people traveling and facing difficulties in traveling and reaching the center, तो कुछ करके भाई हम लोगों को स्टूडेंट्स नहीं, बड़ी मुश्किल से हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट जुड़े हैं। एंड व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज कि हम उनको जल्द से जल्द फ्री करेंगे ताकि आप लोगों के साथ फिर आगे हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर सकें। तो जितने भी लोग यहाँ पर हमें देख रहे हैं इस वक्त लाइव, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने भी आज का एग्जाम दिया है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस और अपने क्वेश्चंस को। नीरज सर एंड सोना मैम, शैल वी डायरेक्टली मेक द स्टूडेंट गो लाइव विद अस? Yeah, ma'am, sure. All right. Hello, Deepak? Yeah, Deepak, we are live right now. So let's start with your, how was your exam? The exam was pretty okay. I cannot say it was very good or very bad. So basically we start, the first portion that we started was the English portion. Right. English was pretty easy. You can say easy or you can say moderate. It was not that tough, which we prepared in the mock sessions. So, and if we talk about current affairs, or if we talk about banking knowledge, so banking knowledge, it was more or less related to more of circulars and number based. Right. It was not, there was no questions for static or anything. So, more or less, if we talk about, there were more of RBI circulars and on the and the number. नहीं, वो topic wise we'll be discussing in a minute. But other than that, आप कह रहे हैं कि it was a moderate sort of an experience for you. Yeah. For subject wise, if we talk about it's moderate, and if we talk about overall, the level was pretty high on a higher side. Acha, it was on a higher side if subject wise we discuss. Yeah. Okay. So since you started with English, Deepak, I would just like to let us say, let's start with the objective part. Okay. So English में, what kind of questions were there? You said you started with reading comprehension. Yes. So what kind of topics were there, like themes, and how many questions were there from the RC section? So basically, exact count, I don't remember as of now. But yes, there were 7 to 8 questions from a single comprehension only. Okay. And the questions was pretty much straight. Okay. There was no combination of questions. Okay. Like with what we have, there was true or false sentence was not there. It was pretty much obvious, and it was more or less, it was fill in the blanks questions which you can easily find out if you read the comprehension correctly. All right. And so within the RC, you got fill in the blanks questions? Yeah, it was within the blanks only. It just you have to read the comprehension thoroughly. Acha, so if you go by question to paragraph, then you will not be able to search it. You have to read the paragraph twice or thrice. Then only you will be able to find the answers. Okay. The answers were there, but they were hidden inside only. Okay, so we had to read it thoroughly. Yeah. And what about error detection? How many questions of that? Error detection, if I remember it was 4 to 5 for error detection. Okay, so कुछ different type of error detection or the usual one sentence? Usual. It was simple, usual. So if you read it, if you can read it, you can get the answers. Okay. And you can get the direct answers. So the options are pretty much direct. There was no same or similar words or similar syllabes were not there. If you can read it, you will get the answers directly. Okay. And what about fill in the blanks? Were there separate fill in the blanks or closed test? Yeah, simple. There was fill in the blanks of 9 questions. 9 questions are there for fill in the blanks. Okay. Single fill in the blanks, like one blank? No. It was one of 9 blanks. It's a paragraph of 9 blanks. So that is closed test in that case, right? So basically in that also it was pretty okay. So you can just read it. There was a couple of questions were there for vocab also. Okay. Which were pretty much okay. You can read it and solve it easily. All right. So English was pretty moderate. We cannot say it was very easy, and we cannot say it was very difficult. So English was pretty much moderate. All right. 9 blanks closed test. इसका theme याद होगा आपको by any chance? Theme I don't remember. Okay. Acha. After reasoning, we forgot everything. I get it. What about parajumble? Was there parajumble questions?
Parajumbles, there was only 1 or 2 questions in the parajumbles. There were no much. Easy parajumbles are tough, like 6 sentences or 1 sentence broken. One sentence. It was a set of 2 questions, 2 sets. You have to just set one. You have to just select that one option. No, I didn't get you. I'm sorry. So when we talk about parajumble, उसमें एक sentence था, उसको break किया गया था multiple parts में. Yes, it was 1 or 2 questions only for which we got it. Acha, sentence rearrangement, 2 questions. Yeah. Acha, what else was there? Anything else if you can recall? That's what I'm saying. After reasoning, I was just blank. Okay. In the reasoning section. So I think maximum attempts from the English sections only. What about the descriptive part, Deepak, if you remember the topics at all? Descriptive, see, what we studied in our classes, descriptive was supposed to be related to recent scenario, but it was totally different. In letter, we got 3 options. First was to write a letter to the branch, to the credit card company, or you can say, to be precise, or we have purchased a smart TV of 63,000 rupees, for which we want to convert it into EMI. Equated monthly installments. Okay. Second was to write a letter to editor, asking him to give a brief article on not to share debit card pins and everything. Okay. And third topic was to write on behalf of a credit card company for a recovery of loans. Acha ji. ठीक है. There were only 3 topics in which we were supposed to choose only 1 topic. Of course. And what about the essay topics, Deepak? So essay, there were 3 topics. One was National Pension Scheme. Okay. Second was the impact of traveling in 21st century. And third was bulliness in a corporate organization. Okay. Workman bulliness. Okay. Workplace bullying. ठीक है. आपने कौन से टॉपिक पे लिखा था? So in letter I've written on equated monthly installments for 63,000 rupees, and second was workman bulliness. अच्छा जी, ठीक है. So now I think we'll move on to the reasoning section. If you remember some questions. Now reasoning I was totally blank because I didn't even attend and didn't practice also reasoning. So reasoning I was totally blacked out. But if you want, I can remember that there was one question of directions. Okay, there was one question of direction. There was one, to be precise, there was one question of DIS. And so basically in one direction means 5 questions. Okay. 5 questions. There was a couple of questions on ages as well. Sona ma'am is there with us. I'll just request her to see. Ma'am, can you hear us? Yes, ma'am. Right. So he's a little not too sure about the reasoning section, but he says that he kind of giving us some keywords for the questions. Okay. Sorry, ma'am. Sorry to interrupt. Deepak sir, is it machine input and inequality in the in reasoning? Hello. Yeah, Deepak sir, is it machine input and inequality is there in reasoning? Hello. उड़ीसा मैम. हाँ जी सर. मैम उनको वॉइस आ रही है मेरी? मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. आप दीपक से पूछ रहे हैं सर? हाँ जी दीपक से मैं पूछ रहा हूँ कि इज इट मशीन इनपुट एंड इनइक्वालिटी आई थी क्या रीजनिंग में? मैं पूछ रहा हूँ सर. Deepak, was there machine input related questions? If I say it wasn't the machine related. So actually the idea is that he was completely unaware of the reasoning section, so that is why he's not very comfortable with it. I think we'll be probably gathering the reasoning questions from some other students and then sharing it. Deepak, आपको GA section का कुछ याद होगा क्या? GA, there were a couple of questions like with the recent acquisition or the recent title ship which was handed to Tata Group for IPL. So what was it tenure of the same, and when was this? What do you call it? There was more or less related to divorce, and maximum question was recently from December and January portion only. So there were not much older questions. And some questions were related to when it comes to banking awareness. There were some questions related to the RRB circular also.
Yeah, maximum questions were related to RBI circulars. So one of the question was related to what RBI circulars or RB circulars? RBI circulars. RBI circulars. So the couple of questions were related to what is the right of percentage which is allowed for export bills. Then there was a question how the value of we are reporting for LRS remittance scheme relates to XPRL. Then what is the amount that our ATM, in case ATM run out of cash, so how the ATMs are reporting. Okay. So that was a question. Then it was a question that in case what is the amount of money you can carry if you are traveling to Libya. Then there was a question that what is not permitted for a payment in import. Okay. If you're doing an outer remittance, then what is the payment which is not permitted. Okay. Okay. So I think overall Deepak has given us as many questions as he could. I would just like to thank Deepak for joining us. उड़ीसा मैम एक स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है चैट बॉक्स में 5 इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस 5 कोडिंग डिकोडिंग 5 कोडिंग इनइक्वालिटी और 5 डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। 5 ब्लड रिलेशन है, 5 इनपुट आउटपुट, 5 कोडिंग डिकोडिंग, 5 कोडेड इनइक्वालिटीज आई थी। ओके, सो आई टेल यू समथिंग सर, एक बहुत ही कॉमन एक फीडबैक जो हम लोगों को मिला है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि सिर्फ कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो क्लियरली कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा था, वो उस हिसाब से तैयारी करके गए और इसमें बहुत सारे सभी लोग एम्प्लॉयड है तो इनका सब्जेक्ट से जो है ना एक डिस्टेंस बना हुआ है। ऑल दीज पीपल इन्होंने कभी ना कभी रीजनिंग पढ़ा जरूर होगा, बट अब जाकर के इन सबका डिस्टेंस बढ़ गया है। तो व्हाट्स हैपनिंग ना मैम कि हम लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिल नहीं पा रहे, और एक ब्लंडर जो मुझे लगता है ऑन द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज एंड कि उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा था सर अबाउट कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बिल्कुल, और उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग देखने को मिल गया। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रीजन बाकी सब्जेक्ट्स में एक थोड़ा सा ब्लरीनेस है, बट यहाँ पर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप लोगों से कि बेटा आप लोग अगर जितने भी आपको क्वेश्चंस एग्जैक्टली याद है, इफ यू गाइज कैन जस्ट राइट दोज क्वेश्चंस टू अस इन मेल और मे बी नीचे कॉमेंट सेक्शन में अगर आप हमें बता देंगे तो वील बी एबल टू बेटर डिस्कस द पेपर विद यू गाइज। अदरवाइज हमारी टीम जो है ऑलरेडी काम पर लगी हुई है, हम आप लोगों के साथ मेमोरी बेस्ड पेपर वगैरह भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बट नीरज सर, ओवरऑल आज के पेपर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो जितने भी स्टूडेंट्स से आपने कनेक्ट किया, आई थिंक यू हैव स्पोकन टू द मैक्सिमम पीपल। या मैम, उनका कहना यही था उन्होंने जो प्रिपरेशन करी थी वो कंप्यूटर को देख के की थी, और लास्ट टाइम में मैंने जो है लास्ट 10 डेज 15 डेज में मैंने उनको DFD वगैरह कराई थी, बाइनरी कोडिंग वगैरह कराई थी, सिंबल्स वाले क्वेश्चंस वगैरह भी कराए थे। जैसा मेरे को लगा कि एज पर उन्होंने लिखा है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो मुझे ऐसा लगा कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड में ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट उन्होंने पूरा उठा के सारे का सारा ही रीजनिंग वाला पार्ट दे दिया उसमें। लास्ट में 3 डेज उनकी जो पेड वाला बैच था उसमें लास्ट के 3 डेज उनकी रीजनिंग की क्लास भी लगी थी, मैम ने ली थी, सोना मैम ने। तो आई थिंक उससे भी सोना मैम क्यों आए थे ना, मेरे ख्याल से लास्ट वाले जो आपने 2 क्लासेस ली थी उससे कुछ मैंने बस 2 क्लासेस ली थी लास्ट में, और उसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग पे ही ज्यादा फोकस करवाया था। कोडिंग से आए हैं 5 क्वेश्चंस। आई थिंक में पक्का वो आया होगा, चाइनीज कोडिंग आई होगी क्योंकि वही ट्रेंडिंग। एंड इसमें 5 इनपुट आउटपुट, ये मशीन इनपुट है, ठीक है। 5 क्वालिटीज बता रहे हैं, तो ये तो कोडेड इनइक्वालिटीज तो फिर मतलब जो टफ पार्ट होता है टफ आया है। और 5 डायरेक्शन डिस्टेंस की बता रहे हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस आई थिंक ये पजल फॉर्म में आई है, पजल फॉर्म में, और उस पे 5 क्वेश्चंस उसके ऊपर बेस्ड होंगे, और तो वो भी पजल होगी। Right, and a lot of students have spoken up about this कि मतलब नोटिफिकेशन से लेकर के अगर हम लोगों ने भी अपना पैटर्न या हमारी क्लासेस को इस तरह से प्लान किया। देखो लकीली इंग्लिश का सारा कुछ वैसे ही कवर हो गया जैसा मैंने पढ़ाया था, बट यार अगर हम लोगों को ये पता है कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड एग्जाम में आना है और वहां पर रीजनिंग के सवाल आ रहे हैं, तो आई थिंक स्टूडेंट्स विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट इवन वी वर कॉट अ लिटिल ऑफ गार्ड। वो तो लकीली मैम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी वैभव सर भी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैम सर हैं क्या लाइन पे? क्या नाम है सर का जो एग्जाम दिया? नीरज सर है। नीरज सर नहीं, आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट हैं लाइन पे? नहीं सर, वो जा चुके हैं, उन्होंने जितने क्वेश्चंस उनको पता थे वो बता दिए हैं हमें। एक्चुअली मैम यहाँ पे कुछ कैंडिडेट को हम बोलना चाहेंगे। एक्चुअली जो सिलेबस में इनका था, जो नोटिफिकेशन आया था
नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें कि उसमें इन्होंने बिल्कुल ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले इस एग्जाम में। अगर हम बात करें कि इंग्लिश में जो पैटर्न रहा वो देखने को ऑलमोस्ट अमूमन सेम ही रहा जो आपका रहा पैटर्न। एंड जीए में इनका करंट अफेयर से क्वेश्चंस आए थे जो रहा, यहाँ पे क्लासेस भी हुई थी इनफैक्ट। और